Okay, we have the different types of chromatographies. Okay. Uh, Yesterday we discussed thin layer chromatography. Okay. The thin layer chromatography, we said that it is having the different technique was adsorption. And stationary phase, thin layer of aluminum oxide, silicon dioxide, Al2O3, and SiO2 painted on a plastic sheet. And mobile phase was a solvent. So that was the thing which we did yesterday. Today we are moving on to another type which is known as gas liquid chromatography. So what happens in the gas liquid chromatography? Uh, this is actually, if I tell you, the airports, they have fitted this gas liquid chromatography. Yeah, because to check, to detect the ये जो explosive material होता है, because they have the vapors, and when their vapors escape into the air, they detect it. And these gas chromatography operators, they used to tell us. Now, how it works? Basically, in this type, first time we change the mobile phase, and our mobile phase is not, in this case, our mobile phase is not the solvent. It is, the mobile phase is an inert gas filled in a gas syringe. It is inert gas like nitrogen that is filled in a gas syringe. And then in the next part, you have a pressure pump to see how you can adjust it. Then, so the mobile phase this time is changed. It is not the any solvent. You see, you understand, it's a gas because it covers the both. It can cover the liquid mixture and it can cover the gaseous mixture. Even the liquid mixture भी आप इससे separate कर सकते हैं. आप उसे heat करते हैं, volatile करते हैं, vapor बनाते हैं और फिर इधर pass कर देते हैं. यहाँ से mixture आप pass कर देते हैं, let's say inside. Our mixture contains three components: C, B, and A. Now the mobile phase that is coming from here, it takes this mixture and goes on. In the next section, now come to the stationary phase. In the stationary phase, we just took you can, for the sake of analogy, you can think of a plastic pipe, ये जो garden में जिसे पानी देते हैं. आप इस एक arm जितना plastic pipe लें, एक बाजू जितना लंबा, और उसके अंदर grease या wax होती है ना, उसका पता है ना, उसके साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिक्स करके ना, ग्रीस और वैक्स के साथ उस पाइप में भर दें. पूरे पाइप में पेट्रोलियम जेली या वैक्स लेके उसमें रेत डाल के मिक्स करके उस पाइप में फिल कर दें. और उस पाइप का एक एंड इधर देखें, दैट पाइप इज एक्चुअली टर्न्ड लाइक दिस. उसका एक एंड इधर कनेक्ट कर दें और इसी पाइप का दूसरा एंड
यहाँ एक डिटेक्टर होता है जो डिजिटल डिटेक्टर होता है, उसके साथ कनेक्ट करते हैं। दैट इज योर स्टेशनरी फेज। सो ये क्या है? प्लास्टिक पाइप है। एंड दिस प्लास्टिक पाइप इज फिल्ड विद व्हाट? अ लॉन्ग चेन एल्केन लाइक ग्रीस एंड वैक्स mixed with what? Aluminum oxide, silicon dioxide, right? This is the stationary phase. So stationary phase is long chain alkane mixed with wax, like wax mixed with Al2O3 or SiO2. And this is also placed in an oven where the temperature is around 120 degree. Now what happens? Your gas comes here, the inert gas, mobile phase, takes the mixture from this area and goes inside the stationary phase. Now, the component of the mixture that is going to interact with the stationary phase, they are going to stay here for a while. And those component of the mixture which absolutely not interfering, they keep moving, keep traveling, and exit this stationary phase as quickly as possible and reach the detector. This time to reach the detector is known as retention time. The time taken to reach the detector. So it means the component of the mixture that is not interacting with the stationary phase, only soluble in the mobile phase, will reach first as the less retention time. वो डिटेक्टर पे सबसे पहले आ जाएगा। और डिटेक्टर क्या करता है? इट इज अ डिजिटल डिटेक्टर। ये अपने रिजल्ट्स को एक चार्ट रिकॉर्डर पे साथ ही रिकॉर्ड कर लेता है। तो चार्ट रिकॉर्डर इज लाइक अ मॉनिटर, जिसके ऊपर यहाँ इस तरह का एक आपका आ जाता है बच्चों ग्राफ। इस ग्राफ में लेट से इधर तो जो है दिस इज टाइम, रिटेंशन टाइम। तो आप कहते हैं जी सबसे पहले कौन आएगा? सॉल्वेंट। हियर इज द सॉल्वेंट। सबसे पहले मतलब मोबाइल फेज, नॉट द सॉल्वेंट, सॉरी, मोबाइल फेज जो इनर्ट गैस होगी। देन वो कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर जो बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर रहा था स्टेशनरी फेज, फिर वो कंपोनेंट जो थोड़ा बहुत इंटरेक्ट कर रहा था, एंड देन फाइनली वो कंपोनेंट जो बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा था विद स्टेशनरी फेज। सो तीनों कंपोनेंट्स आ गए। फॉर एग्जांपल ये हमारा सी है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है। सो इसमें उसमें तो ये होता था ना, कुछ कंपोनेंट पीछे रह जाते थे, कुछ आगे आ जाते थे। इसमें कोई भी पीछे नहीं रहेगा। ऑल ऑफ देम हैव टू रीच टू द डिटेक्टर, बट टाइम टेकन का मसला है। जो स्टेशनरी फेज से इंटरेक्ट करेगा वो पीछे रह जाएगा, जो नहीं करेगा वो आगे आ जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ दे रीच। तो ये उनका रिटेंशन टाइम है। ओके, फिर वो कहता है हमें ओके फाइन, हमें ये बताएं कि ये जो तीन कंपोनेंट्स आए हैं व्हाट इज देयर परसेंटेज। तो आप कहते हैं जी इन पीक्स का आपको एरिया निकालना होगा और फिर एरिया को ऐड करके हर एक की परसेंटेज निकालनी होगी। तो एरिया निकालने का क्या फार्मूला होता है? ये क्योंकि पीक्स आर ट्राइंगल्स ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होगा? एरिया इज इक्वल टू व्हाट? बेस इनटू 1/2 multiplied by base into 8। ऐसे ही है। बट एज ऑल द बेसिस areas are exactly the same, you see, base area is the same for all three. Okay, so therefore you don't need to look at the base, forget about the base and half, just take the height, that's even straightforward। आप जब जाएंगे उसमें आपको पता है पेपर में, तो आपने ये साथ लेके जाना है। ये मेजर करनी है हाइट, लेट्स से आई अज्यूम कि ये हाइट है 30 मिलीमीटर। फिर ये हाइट मेजर करनी है, लेट्स से ये 60 है। फिर ये हाइट मेजर करनी है और लेट्स से ये 20 है। तो व्हाट इज द टोटल हाइट? 30 प्लस 60 प्लस 20 कितनी बन गई है? 110। तो परसेंटेज ऑफ सी क्या होगा? 30/110 टाइम्स 100। समझ आ गई? परसेंटेज ऑफ
बी क्या होगा? 60/110 टाइम्स 100। और परसेंटेज ऑफ ए क्या होगा? 20/110 times 100. You got it? So this is how we get it, right? So these are the percentages. Get it? So here are the, right? And if you look at this now, the mobile phase in the gas liquid chromatography kya hai? What is the mobile phase? It's a inert gas. Mobile phase is inert gas. Stationary phase, it is a long chain alkane mixed with Al2O3 or SiO2. And what is technique? Is it partition or आप बताएं? It is partition or adsorption? It's a partition because the stationary phase apparently looks के solid है, लेकिन 120 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर वो मेल्ट हो जाता है वैक्स और लिक्विड बन जाता है, तो ये एक पेस्ट सा है, प्योर लिक्विड भी नहीं है, ये एक पेस्ट है. So technique is what? It is a partition. Got it? So here it is. So you need to understand the graph that is obtained, percentages कैसे निकालनी है, how the retention time works, time reached to detector, और जिस जो स्टेशनरी फेज से इंटरेक्ट करेगा उसका रिटेंशन टाइम ज्यादा होगा, जो नहीं करेगा उसका रिटेंशन टाइम कम होगा. Right? In this way we look at the gas liquid chromatography. Right? So here we have come to end of these three types of chromatographies: partition, thin layer and gas liquid. पार्टीशन को पेपर क्रोमेटोग्राफी और टेक्निक्स जो फॉलो करते हैं वो दो हैं, दे आर एडसॉर्प्शन एंड the other one is partition. Now let's look into the questions regarding this, how the examiner asks you the questions. For example, look at this. Okay, look at this, please. Parents. A mixture of three compounds, J, K, and L, was analyzed by thin layer chromatography using a polar stationary phase and non-polar mobile phase. बच्चों ये आपको अपने पास लिखना होगा. स्टेशनरी फेज पोलर है और जो वो है और जो वो है मोबाइल फेज वो नॉन पोलर है. अब वो कह रहे आइडेंटिफाई विच स्पॉट करेस्पॉन्ड्स टू विच. नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर स्टेशनरी फेज पोलर है तो वो पोलर को स्टॉप करेगा, और जब वो पोलर को स्टॉप करेगा तो जो जितना ज्यादा पोलर होगा दैट विल स्टे बिहाइंड. नॉन पोलर मोबाइल फेज है, तो जो जितना ज्यादा नॉन पोलर है
वो आगे जाएगा। अब ये तीनों स्ट्रक्चर मैंने बना दिए हैं आपके सामने। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? किसका कितना ज्यादा है, जरा बताएं प्लीज। जे में अगर आप गौर से देखें, इफ यू लुक एट दिस, फॉर एग्जांपल, दिस इज अ पोलर, दिस इज पोलर, so lot of polar bonds in J. Similarly, here are the polar bonds in this. So what do you think, which one is the most polar? And this contains only one polar bond. So CO, this one, the L is the least polar because it has only one polar bond. If you look at that, it has only one polar bond. So it's a least polar, right? Kind of non-polar. So it's going to go with the mobile phase. So L will be the one. Here will be the L. और जो इनमें सबसे ज्यादा पोलर है वो K है. So K will be the here. तो बीच में जो है that is J. Right? So this is how you look at कि कौन सा spot कहाँ पे होगा. Right? अब देखिए, look at the answer which I have written here. So if you look at this, आगे ना कौन सा spot कहाँ पे होगा, we have to see. Look at this. So कहाँ पे होगा कौन सा spots? Here. So 2, 3 and 1. L is 1, J is 2 and K is 3. और वजह क्या है? More polar stays behind. What? ये अभी मैंने सारे बताए हैं ना. स्टेशनरी फेज पोलर है, तो जो ज्यादा पोलर होगा वो स्टेशनरी फेज के साथ रुकेगा, वो पीछे रह जाएगा. जो कम पोलर है वो मोबाइल फेज के साथ रुकेगा और आगे चला जाएगा. इज इट क्लियर बच्चों? So this is how they look at the questions. We'll continue this in the next class. We'll go through the next section, electrophoresis. Thank you.